चंद्रपुर शहर में हवा और पानी दोनों के कारण प्रदूषण का स्तर उच्च मात्रा पर पहुंच गया है और प्रदूषण के इस मुद्दे को लेकर इकोप्रो लगातार 7 दिन से प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रही है। आज 7वें दिन प्रदूषण के किस मुद्दे को लेकर इकोप्रो द्वारा आंदोलन किया गया, देखते हैं इस खबर में। चंद्रपुर जिले के प्रदूषण के मुद्दे को लेकर इकोप्रो की ओर से कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और आज लगातार छठे दिन इकोप्रो की ओर से चंद्रपुर औष्णिक विद्युत केंद्र का मुद्दा उठाया गया। 7वें दिन चंद्रपुर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए साथ ही सीटीपीएस के प्रदूषित यूनिट क्रमांक 3 तथा 4 को अतिशीघ्र बंद करने की मांग को लेकर, साथ ही चंडीगढ़ की धरती पर एयर प्यूरीफायर टावर शहर में खड़ा करने की मांग के साथ अन्य मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय तथा अधिकारी इन्हें साकड़ा घाला सत्याग्रह ये आंदोलन इकोप्रो की ओर से किया गया है। इस मौके पर इकोप्रो के बंडू धोत्रे के साथ अन्य लोगों की उपस्थिति थी। तो सुनिए इस संबंध में बंडू धोत्रे ने क्या कहा। चंद्रपूर शहर प्रदूषणाच्या क्रमवारीत अगदी वरच्या स्थानावर आहे आणि चंद्रपूर शहरातील प्रदूषणास कारणीभूत असणारे अनेक घटक आहेत। त्यापैकी सीटीपीएसचा युनिट क्रमांक 3 आणि 4 यातून होणाऱ्या प्रदूषणाची तीव्रता सर्वाधिक आहे आणि हे कालबाह्य संच आहे आणि काळाच्या ओघात हे बंद करण्याची गरज आहे। यापूर्वी सुद्धा इकोप्रो संस्थेच्या वतीने जनहित याचिका युनिट क्रमांक 1 आणि 2 साठी करण्यात आलेली होती। त्यावेळेस सुद्धा 3 आणि 4 चा इशारा दिलेला होता, परंतु मागल्या 5-6 वर्षाच्या काळात कुठलीच कारवाई या ठिकाणी झालेली नाही आहे। म्हणून चंद्रपूर शहरातील प्रदूषण मुक्तीकरिता आज एमपीसीबीला साकडं घाला अशा पद्धतीचा सत्याग्रह आम्ही अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या 7व्या दिवशी 7वं आंदोलन करीत आज या ठिकाणी सत्याग्रह करण्यात आलेला आहे। चंद्रपूर शहराच्या प्रदूषण मुक्तीसोबतच जिल्ह्यातील प्रदूषणाच्या विषयावर विविध वेगवेगळ्या मागण्या करत, जसे की एअर प्युरिफायर टावरची मागणी प्रलंबित आहे, ते एअर प्युरिफायर टावर करण्यात यावं। चंद्रपूर शहर आणि प्रदूषणाने जे बाधित होणारे नागरिक आहेत त्यांचं उपचार, त्यांच्या तपासण्या ह्या मोफत व्हाव्या आणि तशा पद्धतीची प्रभावी योजना सरकारतर्फे राबवण्यात यावी। सोबतच प्रदूषणाच्या विविध मागण्यांना घेऊन आज या ठिकाणी एमपीसीबीला साकडं घालं अशाच पद्धतीचा सत्याग्रह करत येत्या काळामध्ये या मागण्यांकरिता तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सुद्धा यावेळी देण्यात आलेला आहे।